अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। Hey, Rashid, am I audible? हेलो। Yes, Rashid, am I audible? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है लेकिन कम आ रही है। ये अब आ रही है? अब सही है? जी अब सही। ठीक है। भाई, हम YouTube लाइव पे हैं। जी बिल्कुल, लोग ज़्यादातर यूट्यूब लाइव के ऊपर ही हैं। Okay, welcome everyone. Today we'll be discussing, well, actually, I'm going to relate my lecture from yesterday. Yesterday, we talked about basics of the scientific writing. We actually gone through the key characteristics of scientific writing. We also talked about the best practices and some types of the scientific writing. We gone through them very, basic level. Today we will be talking in detail the research paper, the structuring of research paper, or technically we say that what is actually scientific manuscript. So, if I would say that a research paper or manuscript is actually that highly structured format of any writing uh, in which we have discussed our findings, our results, our discoveries, insights, whatever we have done in a very scientific and very logical manner. Uh, it is actually an organized, uh, organized, I would say, organized writing, organized set of data to reflect the basic pattern of the scientific process. It consists of the key components that every manuscript has: title. It consists of an abstract, then introduction, literature review, methods, results, and discussion, conclusion, references. These are our parts. So we are going to discuss it in detail. Yesterday, I told regarding the IMRAD, this introduction, methodology, results, and discussion. So it's actually a format that a manuscript follows. सर So, आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, प्लीज़ थोड़ा सा लाउड। okay, अब आ रही है आवाज? जी जी, अब कुछ बेहतर है। Okay, okay. Like every well-written story, a scientific manuscript should have a beginning. Okay, we talked this about that. We called it an introduction. So in a scientific writing, an introduction is actually consisting of research topic. It introduces the research topic. We have to state our research question or hypothesis. And in introduction, what we actually do is that we outline our purpose and scope of the study. This is the important part of the introduction. An introduction is you have to write it very concisely. You have to write it very with purposefulness. It should have some objectivity. It should not be written in a casual language. It should be written in a very concise and a very good, in a very good writing manner. Secondly, in the middle, every story has the beginning, introduction, and in the middle, every story, particularly we're talking about the manuscript, it should have consist of materials and the methods, and in the end, the results, the discussion. Discussion is actually the moral of the story, towards the study in perspective. So, in the material and methods, what we do is actually we describe the research design and methodology. Research design means that either we have done a study in a qualitative manner, quantitative manner, or we have done any type of study. It can be prospective observation study,
retrospective observation study, it can be cohort, it can be longitudinal, all these types of the studies. Uh, the methodology also highlights the materials, that what kind of chemicals we have used, what kind of equipment and facilities have been used, what machinery was involved. And we have to highlight all the possible materials, possible equipments, possible chemicals. We have to highlight them, have to cite them with reference, and should be written in a very logical and concise way so that the audience or the scientific community can have the idea अच्छा what सर, actually we have. सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्क्रीन जूम कीजिएगा और थोड़ा सा आवाज का इशू आ रहा है। ये सब बेटर है, बस थोड़ा सा वॉइस का है, प्लीज उसको भी। जी जी okay I'm starting it again I'm going to be repeating that process आवाज अब ठीक है बेहतर है राशिद जी बस नॉर्मल है, थोड़ा सा अगर लाउड पॉसिबल हो, क्योंकि यूट्यूब पे okay भी लोग हैं ना। okay I understand okay talking about a manuscript a scientific manuscript is an organized data set is an organized document which reflect the scientific process. It follows a highly structured format. So I was talking about that in every manuscript there are some structural components, including introduction, methodology, results, discussion, conclusion, and the references tab. So I was talking about that what an introduction consists of. Introduction should have the production should consist of sales topic and it should provide a context, it should provide a purpose and the scope of the study. We should be outlining this in a very concise and technical and logical manner. And then methodology part has to be consist of all the methods, all the materials, including the equipments, including the chemicals, including the facilities that we have used. We have to highlight those in very structured manner. And then after the methodology part, we have to go through to the results. And what the results are consist of? Results consist of the findings of the study, including the data, text, tables, figures, and other visual aids. Results should be reported in a clear and concise manner. Obviously, we have to highlight the result, the important results, not only necessarily the important result, we have to write all the results, including the significant results, including the insignificant results. Then after that, the discussion part. Discussion part is actually the moral of the story, I would say that it is actually the moral of the story that in discussion, we actually compare and actually highlight the significance of our study with the existing data. We have to interpret the results and relate them to the research question along with the, we have to discuss the implications and significance of the finding and the previous research studies. We have to compare the results to the existing research and literature. So this is actually the discussion part that has to be written in a manner that puts the study in perspective. Then the abstract. Abstract is an opening summary of the story, and the title gives the story of the story a name. So abstract should be written in the end. Whenever we are writing a manuscript, what we have to do is firstly we have to write an introduction, then we have to write about materials and methods, and then the results, and then discussion, conclusion. And after all this, we have to write the abstract. Because abstract is actually a summary of all manuscript. An abstract is actually a summary of all the five components in production, materials, results, discussion, and conclusion. And then obviously the title of the study uh, that can be, relates to a specific field, to a specific topic.
can be related in a medical field. If I would say that we have done a study on any kind of medication, we have done a study on any kind of a disease. So that shows the title of the study. Title can be a very short and catchy one. So everyone, by reading the title, the audience, the scientific community member, or any of the people, any of the men could read that title, he or she could understand that what is all about, what this manuscript is all about. By reading the name of the title, the audience can have the idea that what it is all about. So now the question arises that why we are writing a manuscript. So yesterday I also told that scientific communication is actually, in that scientific communication, we actually highlight our discoveries, the insights, the advancement in the knowledge. We have to highlight those. Other purposes are to communicate the research findings, share the results with the academic community, contribute to the knowledge. Yes, I talked about it, that advancing knowledge, okay, advanced understanding in the specific fields. Yesterday I have mentioned it that from any field you can do a research, you can write a research manuscript belonging to any field. Whatever your field of expertise is, you can write a research manuscript, you can do a research, and you can write it down in the form of research article, in form of review article, in form of case study. You can write if you are doing MS and PhD, you have to write thesis. And there's one kind of scientific writing, one type of scientific is called synopsis. Synopsis is actually a research proposal. Okay, research proposal consists of that what we are going to do. So research proposal also follows this same format. In research proposal, only the thing that is not being done is the results. But obviously, we haven't done any kind of result. After the methodology, we totally jump onto the expected outcomes and then some expected conclusion. Now, if I may say that why we are writing a manuscript is that if we want to establish a credibility, that we want to demonstrate the expertise and contribute to the academic or professional reputation, we can write that if I may say that in academics, if you have published a lot many of papers, so the promotions, professional promotions are depending on it. Uh, the degrees are depending upon that. For a PhD scholar, he or she has to publish an article for the award of degree. So it is a necessary part of that. And if you are in academic community, if you are in any of the research institute, working in any of the research institute, so these are actually, requirements for personal and professional growth. Now, the important part, if I would be considering that if I am thinking about the writing a manuscript, so what are the writing consideration that I have to follow? Yesterday, I've also talked about those things. I'm going to repeating those things again. That while writing a manuscript, what consideration we have to follow? Number one is I previously also clarified this that clarity and conciseness. Our article, our writing should be clarified, should be concise. We have to use a clear and concise language for the better understanding of the audience. Then the manuscript should be organized and structured. The we talk about the IMRAD structure, the introduction, methodology, result, and discussion. This is actually a structured and organized way. So it follows a logical structure. Then accuracy and precision. Accuracy and precision is required that we have to ensure data and methods are accurately represented. How the data is represented, it is represented in the form of text, tables, figures, other visual aids, so that the audience can be attracted. Figures are added, visual aids are added, so the audience can be attracted and they may get the idea very well about the writing, about the research article that is being written. Then obviously, proper citation is required. Credit the sources and avoid plagiarism. Okay, if we have written a single line, we have to credit it. We have to cite it, the reference for it, and there are a lot many softwares for plagiarism checking. Turnitin is the very famous one. In Pakistan, we actually use Turnitin, and now Turnitin software has another option.
it now also gives you a ratio of artificial intelligence writing, AI writing, because nowadays many of the AI-based tools are here for writing. So AI person is also being calculated. So it should be aligned with the plagiarism code to avoid, to avoid the rejection issues or to avoid the, the plagiarism. And because plagiarism and similarity index, it should be less than 19. And every research journal has its own author guidelines. Uh, before publication, before submitting an article to a particular research journal, you have to go through the author guidelines. That author guidelines will give you an idea how to write an introduction, how to write a method and materials, how to write a result and discussion in that particular journal. Okay, so they give you the idea that 19%, 15%, or whatever the percentage they ask related to the plagiarism, that it should be less than this percent. So we have to cite the proper citation to number one, to credit the sources and avoid plagiarism. No, no, screen is not stuck. I am only explaining it. The screen is not stuck. I'm just explaining it. I'll be moving to next part as well. Okay. Next, if I may repeat all the things that the nutshell is that your manuscript should be written in a very clear and concise language. It should follow a logical structure. What is the logical structure? I have highlighted in here in the yellow part that it should consist of the introduction, materials, results, discussion, and the abstract in the opening and the title. So this is the main, the summary of it, that what a manuscript or a research article or a research writing should look like. Now, some of the pitfalls and errors. Grammatical errors, we should be looking very carefully that to avoid grammatical error, we have some now very famous software. Grammarly is there, Quillbot is there, other more softwares are there, so you can use it. Grammarly and Quillbot are very friendly, user friendly, so we can use it. Then the formatting error. First of all, I would be clarifying the grammatical error. In grammatical error, what we think is that people may, may make error in tense consistency. Okay, inconsistent use of verb tenses within the sentence or paragraph. Uh, Punctuation errors are there. Subject work agreement, and the incorrect use of the commas, semicolons, and punctuation marks. So these are some examples of the grammatical error. Then comes the formatting error. Formatting errors are actually the every research journal has its own structures. Uh, like if I would yesterday I told that some of the research journals, they ask you to write your results in a structured manner, like to give a headings in the results. Okay, and discussion, they ask you to write a discussion in a structured manner as well. Some research journals ask you to write results and discussion collectively. Okay, so this is the formatting actually. So we have to go through the formatting errors as well. In which journal we are submitting it, we have to follow their guidelines. So formatting errors actually refers to that they are the actually the mistakes in the visual arrangement and presentation of the text, including the the inconsistent spacing, incorrect font size, misaligned text. It can be table and figure formatting. That if a researcher is asking you to cite figures in the form of like they are asking you to cite figures in the pie graph or bar graph, and you have presented your figures in some other type, some other form. So that's a formatting error. So we have to be careful for that as well. The consequences for formatting error is actually that it distracts the reader. Okay, it distracts the reader. It diverts the attention from the content, and
during the peer review process. Peer review process actually that when you write a research article, when you write a manuscript, you submit it in any research journal, and then your manuscript goes to a review process. So the reviewer, he or she gets distracted from the content, and uh, it's, it seems that you have got a lack of professionalism. You haven't gone through the uh, guidelines of the research journal. So that poor formatting can undermine the credibility of work as well. So it is very important to go through the formatting errors, to go through the grammatical errors. We have to go through it. And if I may tell you that in grammatical error, the consequences are that same lack of professionalism. Obviously, we have to check the grammar. We have to proofread. We have to edit so that it look like manuscript should be a sound piece of scientific writing. It should be a sound piece of technical writing. So we have to be very careful. So this is a very important point, pitfalls and errors, grammatical errors, formatting errors, and now what are the technical errors? By technical error, it relates to, uh, every specific field has some, obviously the technical, every field has some kind of a technical, protocols. So we have to follow it. So the technical errors, they may relate to, the issues in the technical aspect of document, project, or system, uh, data errors, okay, that inaccurate or inconsistent data, uh, data collection, inconsistent data processing or analysis, uh, the software or the equipment we are using it, in that software or equipment, there is some kind of a malfunction. We have done some methodological errors that the research design was not that good. We haven't used the right statistical test for it. So these are the technical, the errors that related to specifically from the methods and materials part that we haven't been gone through the results, technical issues. Now, if we talk about the consequences related to technical errors, it may also perceived as the lack of professionalism. Yeah, in all the three things, grammatical errors, formatting errors, and technical errors, lack of professionalism is shown. If there are grammatical errors, there are formatting errors and technical errors. And first of all, lack of professionalism is being shown. Diversion, diversion from the original, the content of the study. By technical error, we can have the incorrect results. Uh, we have the loss of credibility. Technical error may cause, the data is lost, or the writing that you have submitted, it can be rejected. So we have to work it from the start. We have to work it from the start. So we should be careful from the very beginning while writing a manuscript. We should be careful from the beginning while considering that we are going to publish it in this research journal. So we have to follow the guidelines. Okay, so this is very important points, that pitfalls and errors. So how we have to clear all these things. Similarly, we have to proofread and edit it. Okay. In a research article or in any kind of a writing, specifically if I talk about research article or review article, there are a number of co-authors working together. Specifically 5 to 6 people or 8 to 9 people are working together. So there should be a process of proofreading and editing. Okay. Whenever we submit a research article or review article in any research journal, they actually have a clause of author contribution. They actually ask that which author has done what thing, what author has done what part. So we have to um told the editors or the reviewers, we have to uh, give in writing the copyright or the author contribution form, that this author has conceptualized this title, this author has written the original draft, this author has done with done some thing with the software. This author has compiled the result. This author has written the discussion. So we have to give them the author contribution. Okay. And then in the end, we have to give them a conflict of interest statement. There is no conflict of interest among the authors. Okay. No competing interest among.
So we have to give it. So we have to go through the proofreading and the editing process. So if a team is working, they should be very careful, should be very responsible, they should be very professional, and they should go through all the processes and all the pitfalls and errors. So the article cannot be rejected. So by going through all these processes, now your article, your manuscript is polished. So the polishing of your manuscript is ready to submit in any kind of a particular journal. I've highlighted some of the search journals, some of the publishing companies, like navigating the publication landscape. The journal website, we have Laws, Software, Sage, Winger, Elsevier, Zambase. We do have the Taylor Francis. We have the Scopus and Web of Science, the databases. These are actually some of the databases, some of the research publication companies. So we can access the journals from there. We can see that our manuscript, in which research journal our manuscript is fit, in which research journal our study has this aim and scope, so we can publish it. So every research journal which is being mentioned here has its own guidelines, has its own peer review process. So we have to go through it very carefully regarding that. Well, I don't have to move the screen too much. It's just a one page. Actually, I was explaining it because the explanation is very much required, and you will get the recording. If you have any question in future, uh, I'm going to be answering that, or the management they will be answering that question. So don't worry about it. I'll have the question answer session in the end, and if you would like that, I would answer you that question in local language in Urdu. I'm going to be giving you that as well. But due to the presence of international audience, I have to be formal. But while answering the question, I can be informal as well. And then, for sake of the international audience, I'm going to be repeating that in English as well. So next, I'm going to be going through some other important point. Well, what does writing clearly and concisely means? Writing clearly and concisely means using your word deliberately and constructing your sentences carefully and using grammar properly. Okay. This actually is actually this I just filed it today uh, to clarify because many of the students who are attending this lecture they are specifically from the undergrad students, they are undergrad students. So the understanding of the undergrad students is, some kind of a, I would say, research is actually an upgrade, an advanced level of, education. So undergrad students are not used to it. So I have to be very, make it very, very simple wording, make it very basic, so that they could easily understand. So I am again, okay, what does the writing clearly and concisely means? Okay, you are using your words, choosing your words deliberately, and constructing your sentences carefully and using grammar properly, so that we could avoid the grammatical errors, we could avoid the formatting errors as well. So by writing concisely, you will get straight to the point. Okay, why we are going to straight to the point? So that the audience can be attracted, so that the scientific community can be attracted, and that scientific community can get benefit from it. When writing an academic research manuscript, being clear and concise is critical. Okay? We should be clear. That this is the main point. Avoiding the unnecessary words can help your reader focus on key information and also helps you stay under word or the page limit imposed by your target journal. Okay. Sometimes research journals they restrict you. Previously, I gave you the example of results. Some research journals ask you to write the results and discussion collectively.
Okay, some research journal asks you to write the results and discussions separately. Some ask you to write the results and discussions separately in a structured manner. Okay, some research journals, they don't have any restriction regarding the abstract part. You may write in unstructured way, you may write in structured way. They don't have any restriction. For some research journals, they restrict you. Like they restrict you that your manuscript abstract should be 200, should be consisting of 200 words. So whenever you write 201 words, so that one word will be a restriction. They will return your manuscript, they will say that kindly reduce it to 200 words. Okay, so these are some the issues. That's why I'm focusing on clear and concise. Okay, so there I highlighted it that it helps reduce reader focus on key information and also help you to stay under word of page limit imposed by your target journal. So conciseness is clearer, avoids confusion, making the writer easier to read. Okay, so conciseness communicate the complex idea more clearly. It's actually communicating complete information about topic or idea in a few words. That is the important aspect there. So you need to choose the strongest words to illustrate your point. So again, here I have highlighted some of the the search here. Here you can add as well. You can add the Lancet nature portfolio. Uh, you can add here some other like Springer Nature, BMC. Yeah, Springer is there. So these are actually the publishing company. You just Google their name and you'll get the research journals. So you get the research journals and you can have the idea that which research journals are related to your field. Okay, you are belonging to a medical field, you are belonging to engineering sciences, you are belonging to a social sciences, whatever field you are. So you can find a research journal according to your choice, according to your field. So there are some proposals and reports. Proposal I've talked about the synopsis, the research writing, research proposal. Okay, research proposal synopsis that actually document consisting of the research idea. You are actually presenting your research idea to some research committee. Uh, you are actually working on, you are doing some MPhil PhD project. So you have to present your research proposal in front of it. So they should be clear and concise as well. Okay. Then the paper analysis, strength and improvement in the research articles, they should be gone through all the things, but I have told you previous document that the grammatical error, technical error, formatting errors, the proofreading and editing, they all are the part of actually the paper analysis. It strengthens and improves the research article. So these are the important aspects of the manuscript. Talking about conclusion, in conclusion, we actually write in one paragraph, we actually write the significance of our finding, and we also highlight the future limitation, sorry, future recommendation and limitation as we highlight with that. So it signifies your findings and it creates an impact. In conclusion, we in a very precise and concise manner, in one paragraph, we highlight the significance of our finding. We actually highlight the future recommendation and the limitation of our studies. And then we do give the references. It should be in a bibliographical form in a very structured manner. We do have many softwares for referencing, EndNote, Zotero, Mendeley, many referencing softwares are there. EndNote is very user friendly. So EndNote has many formats. Some references, some research journal asks you to cite the references Vancouver style. Some ask you to give in Chicago style. Some ask you to write in numbered. So there are a lot many styles. So EndNote is a software used for referencing. Essentially, your referencing library. Uh, so it is used for the database like for your own. Okay, so EndNote is a bit technical thing. For the undergrad or for the beginners of research, it's actually a new thing. So many tutorials are present on YouTube for the use of related to the use of EndNote. So
It's very important to understand the softwares as well while writing a manual, specifically the EndNote for data analysis like SPSS, Minitab, uh, the other softwares related to the equipment. Okay, if you are using any equipment, so the software related to that equipment, you have to go through it as well. You have to have a technically you should be sound while using that. So these are the aspects. And the other thing that is very important is that your statistical analysis, your knowledge and your grip on statistical analysis, that should be very important. That what test you are doing, either you are applying descriptive analysis, mean, median, mode, standard deviation, whatever, or if you are applying an inferential statistics, either you are applying chi-square test, you are applying regression, you are applying ANOVA, whatever the test you are applying, you have to have grip on it. Uh, Many of the teams they do have a statistical analyst as well. They do have a statistical officer. They do have a statistician. They do take help from the statistician as well. So if your team has a statistical analyst or statistician, then it's very good. But if you are doing it on your own, you should have taken advice from the statistician as well. And if your statistics is good, you know what you are doing, you know what you are applying, statistical test, for which statistical test you are applying, and you know that, that is very good. But if it's a problem, then statistical analysis should be consulted with some statistician or so that the results should be compiled in a very accurate and a very that the results should be accurate. There should be no inconsistency, no inaccuracy in them. Okay, this is from my side, complete from my side. Do you have any questions, please? Yes, any questions, please? कोई सवाल है किसी का तो प्लीज पूछे जी. Assalamu alaikum, sir. Yes, walaikum salam. Sir, at the start of lecture, you said citation is mandatory. Yes. So, sir, can you explain it, please? How many types or styles of citation? Okay. आप किस यूनिवर्सिटी से हैं भाई, बताइएगा मुझे. Am I audible, sir? Yes, yes, you are audible. किस यूनिवर्सिटी से हैं आप? Sir, अखवत कॉलेज कसूर. Okay. Actually, yesterday कुछ सवाल मुझे खुद भी हुआ कि मैं मतलब उर्दू में एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो है ना वो इसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, बहुत सारे बिगनर्स होते हैं. So one of the participant here he was a foreigner. Then I've explained that in English as well. अच्छा, जहाँ तक ताल्लुक है ना साइटेशन के हवाले से आपने सवाल किया है, देखिए साइटेशन का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी लाइन लिखी है, कोई भी डेफिनेशन लिखी है, कोई भी क्लेम किया है, तो आपने उसको साइट करना है कि आपने इसको कहाँ से पढ़ा. ठीक हो गया, कहाँ से आपने ये चीज पढ़ी है, आपने अपनी वर्डिंग में उस चीज को लिखना है और आपने उसको साइट करना है कि हाँ जी कि मैंने फला बुक के फला चैप्टर से या फला सर्च आर्टिकल से मैंने इसको देखा था, तो उसको आपने बस साइट करना. अच्छा, साइटेशन की जो टाइप्स की आप बात कर रहे हैं ना, वो फॉर्मेटिंग स्टाइल्स होते हैं, तो वो डिफरेंट होते हैं. तो वो जब आप एंड नोट यूज करते हैं तो उसके अंदर वो डिफरेंट फॉर्मेटिंग स्टाइल्स वो मौजूद होते हैं. तो वो उसमें आप जिस भी रिसर्च जर्नल में आप जमा कराने जा रहे हैं,
आप उसके मुताबिक उसको जो है वो देख सकते हैं, उसके मुताबिक उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, उसमें कोई इतनी मेहनत नहीं होती, जस्ट वन क्लिक पे वो हर चीज़। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस रिसर्च जर्नल में जमा करा रहे हैं अपना काम, किस यूनिवर्सिटी में आप अपना थीसिस जमा करा रहे हैं, जो भी है। तो जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके मुताबिक आप उसको फॉलो करते हैं। उसमें इतना मतलब वो कोई वो है सच ना कोई हेक्टिक काम नहीं है, इट्स जस्ट अ वन क्लिक अवे। Thank you, sir. Thank you very much. I do have one another question that today's topic was cracking the research paper structure, but we have started with the manuscript, and manuscripts research में कहाँ यूज होती है? नाम यहाँ पे जो आ रहा है दैट इज वहाब। मे आई आस्क मिस्टर वहाब दैट इस कॉलेज से हैं आप, और कौन से डिपार्टमेंट से हैं? यस, डू वी हैव मिस्टर वहाब हियर? He is not here. Anyways, I'm gonna explain it. Well, the research paper, cracking the research paper structure, and you have started with the manuscript. अच्छा, मैं थोड़ा सा वेरीफाई कर दूं कि जो रिसर्च पेपर का स्ट्रक्चर और मैनस्क्रिप्ट, टेक्निकली जो टेक्निकल वर्ड है फॉर अ रिसर्च पेपर इज एक्चुअली अ मैनस्क्रिप्ट। ठीक हो गया? हम रिसर्च पेपर को साइंटिफिक जो टेक्निकली हम वर्ड कहते हैं दैट इज मैन्युस्क्रिप्ट। और मैन्युस्क्रिप्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वो वही रिसर्च पेपर का जो स्ट्रक्चर जो मैंने आप लोगों को सारा बताया। इट कंसिस्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, मेथड्स एंड मटेरियल्स, इट कंसिस्ट ऑफ रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, कंक्लूजन, ये सारा कुछ होता है। ठीक है। और इन्होंने जो सवाल किया मैन्युस्क्रिप्ट रिसर्च में कहाँ यूज होती है, तो रिसर्च पेपर मैन्युस्क्रिप्ट को हम, यानी कि जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट है ना, चाहे वो रिसर्च आर्टिकल हो, चाहे वो रिव्यू आर्टिकल हो, चाहे वो थीसिस हो, चाहे वो कुछ हो, मैन्युस्क्रिप्ट हो। ठीक हो गया? तो इनके सवाल से मुझे ये अंदाजा ये हो रहा है कि ये मतलब इज द बिगिनर रिलेटेड टू द रिसर्च। सो अच्छा सवाल है बिगिनर्स के हिसाब से, ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सो मैन्युस्क्रिप्ट इज एक्चुअली अ टेक्निकल वर्ड यूज फॉर एनी काइंड ऑफ रिसर्च राइटिंग। यानी कि हम ये कह देते हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट, तो मैन्युस्क्रिप्ट कैन बी अ रिसर्च आर्टिकल, कैन बी अ आर्टिकल, कैन बी अ केस स्टडी, कैन बी कोई भी मतलब इसका साइंटिफिक राइटिंग हो सकती है इस सवाल से। Okay, another question we've got that can you please repeat the conclusion part of research? Well, in conclusion part, what we actually do is that we signify our findings. हम एक्चुअली हमारी जो इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स होती है ना, उनकी हम सिग्निफिकेंस उसमें लिखते हैं कि एक्चुअली हमने अब फाइंड आउट किया चीज़ है। ठीक है, तो उसको हम हाईलाइट करते हैं। फिर हम ये भी लिखते हैं कि अब जनाब हमारी फ्यूचर रिकमेंडेशन इसको लेकर क्या है कि मजीद इस पे काम क्या हो सकता है। Because we all know that the research gap is everywhere. Science is all about errors and trials. तो साइंस के अंदर गैप्स रहते हैं, रिसर्च गैप जरूर रहता है। तो whatever you have done, you have to write it in very concise manner. आप एक दो लाइनों में अपनी significant findings को लिख देते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आप फ्यूचर रिकमेंडेशन बता देते हैं, और साथ ही भी थोड़ी सी लिमिटेशन बता देते हैं कि जी ये थोड़ा सा है। अच्छा, अब कुछ रिसर्च जर्नल्स क्या कहते हैं, ये कंक्लूजन आपने बता दिया, आप लिमिटेशन और रिकमेंडेशन को अलहदा नहीं चले। ओके, सो ये वही बात होती है कि हर रिसर्च जर्नल का अपना जो है वो इसमें क्राइटेरिया होता है। तो उस पर कंक्लूजन में बेसिकली सारी स्टोरी को जो है वो हम अपने रिसर्च को कंक्लूड करते हैं। Okay, another question we've got that any authorship criteria available? Yes, we do have authorship criteria available. आप किसी भी अच्छे रिसर्च जर्नल को ओपन करें, ठीक है, अच्छे से बता दिए कि जैसे मैंने जो नाम दिए हैं, आप सिंपली गूगल पे जाएं और उस पर ऑथरशिप क्राइटेरिया आप लिखें, तो आपके पास जो है वो पर्टिकुलर जो है वो लिस्ट एक आ जाएगी कि ऑथर क्राइटेरिया के अंदर, ऑथरशिप क्राइटेरिया के अंदर क्या क्या चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। तो वो आप गूगल स्कॉलर पे या गूगल पे जाके आप लिखें, आपको डिटेल में चीज़ें वो मिल जाएंगी। For pharmaceutical sciences, I would recommend that you consider the HEC recognized research journals.
which are actually the Y category. You just go on to HEC website and download the list of Y category journal. So you should submit in that. Uh, they are mostly they are free of course. बहुत सारे रिसर्च जर्नल्स जो है ना HEC के हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो आते हैं, अगर आप फार्मास्यूटिकल साइंसेज फील्ड में ऑफ पाकिस्तान, देन आई वुड रिकमेंड कि आप हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे जाकर वहाँ पे उनके जो रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च जर्नल्स हैं, उनको जो है आप वो कंसीडर करें, दे आर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो वो ये है कि एक अंडरस्टैंडिंग भी कि सारा कुछ हो जाएगा, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट फॉर अ बिगिनर and who wants to write any kind of an article, review article, research article. But if I would like to share my experience, my first article was an international search article. It was a 4 impact research article. So I published in that. उस research article का impact 4 था, जिसमें मेरा पहला experience था. लेकिन हाँ, उसमें मेहनत लगी, time लगा. It do require some expertise as well. पूरी एक टीम थी जिसने मिलकर काम किया था. तो ये डिपेंड करता है टॉपिक पे भी, that in what kind of a topic you are working on. By either you are writing a review article on a formulation based drug design, or if you are writing a research article or any disease, any you know, any of the drug related problem, any of the patient oriented problem. So it depends. Another question we have that you talked about the Grammarly in writing. So, what do you use Grammarly AI for rephrasing? Is it a better way? Well, to be honest, मैं अगर आपको बात बताऊँ, Grammarly को आप यूज करें, लेकिन उसको ये है कि फिर आपने बड़ा ही केयरफुल हो कि आपने उस चीज़ को जो है ना वो, बिकॉज द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेशियो इज देयर. तो वो ये है कि जो मीनिंग ऑफ द सेंटेंस होता है ना, और जो एक्चुअली आप जो चीज़ बताना चाह रहे हैं, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा वो चेंज कर देता है. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल यूजिंग इट. आप पैराफ्रेजिंग के लिए आप सिनोनिम एंटोनिम्स थोड़ा सा आप उसकी ग्रामर चेक के लिए वो चीज़ें आप कर सकते हैं. फिर एक ग्रामरली प्रीमियम भी आता है, वो पेड होता है. ठीक है, वो पेड होता है, तो उसको भी आप जो है वो यूज कर सकते हैं. ये होता है कि एक्चुअली आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर करता है, लेकिन उसको बड़ा केयरफुली हमें यूज करना होता है. हमें मतलब उस सेंटेंस को 10 बार पढ़ना चाहिए टू मेक श्योर कि जो बात हम करना चाह रहे हैं कि ये वही बात कर रहा है कि नहीं. पता चले जनाब आप कुछ और कहना चाह रहे हैं और उसने मतलब ही इसका कुछ और कर दिया. ये है, तो बड़ा केयरफुल होके इसको जो है ना वो करना पड़ता है. तो ग्रामरली मैं बिगिनर्स को मैं सजेस्ट वैसे भी इसलिए नहीं करूंगा. ग्रामरली आप यूज करें लेकिन किसी एक्सपर्ट के अंडर हो, ताकि आपको सीखने को कुछ मिले कि किस तरह से रिफ्रेजिंग की जाती है, किस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने एडजस्ट करना है. यू हैव टू गो थ्रू इट वेरी. आप अकेले उसको ना करें. यू आर बिगिनर, आई वोंट सजेस्ट कि आप इसको खुद यूज करें, किसी की सुपरविजन में या किसी की हेल्प लेके उसको यूज करें, सो दैट यू बेटर लर्न. लेकिन अगर आप एमफिल की स्टूडेंट है, पीएचडी की स्टूडेंट है, अगर आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो फिर तो आप उस चीज को खुद भी कवर कर सकते हैं. लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं जरा थोड़ा सा सजेशन. Which is the best way to learn the vocabulary for writing the article for sentence in the paragraph? Well, इस सवाल का जवाब ऐसा है कि it relates back to your school and college education. Okay? आपने स्कूल में जो बेसिक इंग्लिश पढ़ी थी ना, कि पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये सारे जितने टेंसेस है और सारा कुछ है. बेसिकली आपकी जो स्कूल की जो बेसिक इंग्लिश की जो आपकी जो बैकग्राउंड है, वो इसमें ज़ाहिर बात है ज़ाहिर होती है. तो इसके लिए बेहतर ये होता है कि देखें, इसमें आपको रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए. ओके, इसमें आप अपनी वोकैबुलरी इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं दैट आप राइटिंग की प्रैक्टिस किया करें. ओके, एक पैराग्राफ आप लिखें, उसको आप किसी को चेक करवाएं, उसको फिर आप थोड़ा सा उसमें और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आएँ. फिर आप उसको जो है वो क्या कहते हैं, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपकी जो क्लैरिटी है वो ज़रा थोड़ा सा और बेहतर होना शुरू हो जाएगी. तो इट टेक्स टाइम. मतलब ये चीज़ मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा टाइम लेती है, और एक स्टेज आती है कि आपकी वो राइटिंग स्टाइल जो है वो बेहतर हो जाता है. नीड्स अ प्रैक्टिस. चलो, आपने जनाब हमें आंसर किया है अब्बासी यूनिवर्सिटी. Okay, referring to the word count limit, are we considering standard word like and the and that in the limit or not? Yes, exactly. Word count के अंदर तो सारे ही आ जाते हैं. वर्ड काउंट के अंदर तो ये सारे आ जाते हैं. कि आपने पूरा पैराग्राफ एक लिखा है,
उस पैराग्राफ की वर्ड काउंट क्या बनेगी। आप वर्ड काउंटर सॉफ्टवेयर होते हैं, सिंपली आप उसमें उसको डालें और बता देगा कि कितने वर्ड्स, तो सभी उसके अंदर आ जाते हैं। ये जो हेल्पिंग आपने वर्ड्स लिखे हैं, ये जो सारे इसमें सब आ जाते हैं। Well, how much extent we can use AI for writing the thesis? Well, to be very honest, AI को यूज करना नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि अगर आप थीसिस लिख रहे हैं तो आपकी अपनी एक क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिसिस होनी चाहिए और क्रिटिकल राइटिंग आपकी अपनी होनी चाहिए। मतलब मैं अपनी एग्जांपल दूं, नो वन इज परफेक्ट, ओके, एंड एवरी थीसिस इज नॉट परफेक्ट, ओके, बट एआई का यूज जो है ना, वो उसको आप ये कहें कि अगर वो परफेक्ट बना देगा, नहीं, वो खराब भी कर सकता है। मैंने पहले ऊपर बताया ना कि बहुत सारा ऐसा एआई जो है वो आपके मीनिंग्स को इस तरह से बदल देता है कि वो जो है ना वो सही नहीं होता। वट ओनली यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम एआई इज दैट कि आप सिनोनिम एंटोनिम्स देख लें, ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मतलब उसमें आप देख लें। तो एआई को अगर आप थीसिस में यूज कर रहे हैं तो वही बात है कि आपका लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है। अगर यू आर अंडरग्रेड स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट और पीएचडी स्टूडेंट, तो अगर आप पीएचडी स्टूडेंट है तो फिर तो आपकी अपनी राइटिंग स्किल और आपकी क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिटिकल जो एनालिसिस है वो आपका इतना बेहतर हो चुका होता है कि आपको इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर इनिशियली अगर आप इसके आदी हो जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वी शुड बी वेरी केयरफुल दैट रिगार्ड, और किसी की सुपरविजन में इसको आपको यूज करना चाहिए। ये मतलब मेरा एक मशवरा इसमें ये है। और एज फार एज माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मैंने ग्रामरली यूज किया है और मैं यूज करता हूँ प्रीमियम ग्रामरली खास तौर पे। उसमें ये होता है कि थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो और ज़्यादा स्टैंडर्ड और फ्लुएंट, तो लेकिन उसको भी फिर जारी बात है हम खुद भी उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं। टोटली हम उस सॉफ्टवेयर के उस पर नहीं हम जाते। वेल देयर आर मैनी एआई टूल्स टू रिफ्रेश दी आर्टिकल्स। ग्रामर की मैंने मिसाल दी है, क्विल बोट है, और भी इसके अलावा काफ़ी है। ओके, देयर इज वन क्वेश्चन दैट हाउ वी कैन यूज एआई फॉर आवर रिसर्च। ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन इस पर किया है। कैन वी यूज एआई टू मिनिमाइज द प्लेजरिज्म एंड फाइंड द जेन्युइन इन आवर ओन पैराफ्रेजिंग। यस, मैंने आपको बताया ना कि इसको आप यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज एआई एज ए हेल्पिंग टूल to improve the sentence structure, to improve your grammatical mistakes, but we totally rely on that. We do not have to totally rely on that. We have to have some, you know, we have to do some corrections and we have to do proofreading after that. Okay, तो इसमें जो है ना आपको जो है वो इसमें करने की जरूरत है। खुद आप इसमें जो है वो कुछ थोड़ा सा उसको एनालाइज करें एंड देखें कि क्या मतलब उसमें गलतियां हैं, कोताहियां हैं। और उसके ये है कि फिर आप किसी भी सॉफ्टवेयर से मतलब उसकी प्लेजरिज्म चेक कर रहे हैं सारा। मतलब इसमें यह है कि आपको एआई के लिए एक लेवल ऑफ एक्सपर्टीज की जरूरत है। लाइक आई कुड से कि मैं अगर रिलेट करूं अपने आप से, आई डोंट हैव दैट एक्सपर्टीज कि मैं टोटली एआई पे मतलब मैं कह सकूं कि जी मैं एआई पे जाऊं, मेरा बड़ा ग्रिप है, नहीं है। तो मतलब ये कि उसमें वही बात आती है ना कि बहुत सारा जो है ना एआई जो है वो चीज़ों को कह लें कि मिस इंटरप्रेट कर देता है, तो वो उससे ज़रा थोड़ा सा बचना चाहिए। Well, another question is that how we can start a research with introduction which looks catchy. It takes time. It takes time. Catchy means that it should be clear. Okay, it should be clear and should be readable and it should be understandable for any related field. Like for example, अगर आप जो हैं वो मेडिकल फील्ड के हैं और अगर आप कोई इंजीनियरिंग बेस्ड जो है वो आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो वो इतना बेसिक लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए कि वो आपको अंडरस्टैंड, दैट इज एक्चुअली अ, ठीक है, कि आप बोर नहीं हो रहे, आप बोर नहीं हो रहे, आपको बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं हो रहा, आपकी अटेंशन डाइवर्ट नहीं होती। तो ये एक इसमें एक चीज़ आती है। तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, और ये होता है कि इट नीड्स प्रैक्टिस। तो वो ये है कि वो टाइम हो जाती है वंस यू आर फॉन्ड ऑफ सर्च राइटिंग, तो वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं।
Selection of topic, how we can select the topic for research? Well, related to topic selection, ये depend करता है आपकी field के ऊपर. It depends totally on your field, whichever field you are, and it totally depends on your area of interest. Okay, let's suppose if I talk about that, if you are related to, for example, you're from medical field. Okay, so your area of interest is actually the orthopedics. So you have to go to the topic related to orthopedics. Okay, अगर मैं आपको ये कह दूं कि जनाब नहीं आप तो नेफ्रोलॉजी से रिलेटेड कोई काम करें तो वो आपका इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, उसमें आप काम नहीं करेंगे या करेंगे तो वो उस हिसाब से नहीं करेंगे जो आप ऑर्थोपेडिक्स में कर सकते हैं बिकॉज आपका इंटरेस्ट वो. ओके, सो यू हैव टू लुक फॉर योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट, you have to look for your area of expertise, and you have to look for the area जहाँ पे आपको जिसकी mentorship आपको, that is very much important. Well, Assalamu alaikum, sir. Perchance of dot score in match USMLE. What is in research in it and which research type should go? Meta analysis, LTE, also. Okay, okay. Well, USMLE, if I talk about that, it is actually, competitive एग्जाम. मतलब लाइक ये एक एक्रेडिटेशन एग्जाम है. जैसे मतलब हमारे यूएसएमएलई है, नेपलेक्स है, एसपीएलई है, डीएचए है, एमओएच है, हार्ड है. डिफरेंट मतलब है, जैसे कैप्स का एक टेस्ट होता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो डिफरेंट मतलब टेस्ट होते हैं. तो आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन दैट, और आई हैवंट हर्ड फ्रॉम एनीवन के रिसर्च का उसमें कोई इतना ज़्यादा वो तो देखते हैं. बट देखें, अगर आप लेट्स सपोज अगर आप एफसीपीएस कर रहे हैं, फर्ज करें इफ यू आर एन एमबीबीएस स्टूडेंट, मैं आयास कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है? यूएसएमईडी वाला जिसने सवाल किया है, मैं आयास कि आप एमबीबीएस है बीडीएस है, तो मैं उससे ज़रा थोड़ा रिलेट कर दूंगा इस चीज़ को कि वन ऑफ माई कलीग्स हैव द एक्सपीरियंस ऑफ इट, तो मैं उसको डिस्कस कर सकता हूँ उस हिसाब से. और बाकी जहाँ तक कल पब्लिकेशन का होता है, तो देखिए पब्लिकेशन वाई कैटेगरी हो जहाँ की भी हो, it should have some international indexing. Okay, so the international indexing means कि वो databases में हो, international databases में. और हमारे बहुत सारे वाई कैटेगरी या हमारे बहुत सारे हायर एजुकेशन कमीशन के रिसर्च जर्नल्स हैं वो इंटरनेशनल उसमें हैं, जैसे कि जेपीएम में है, जर्नल ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, सब वेरी गुड रिसर्च है. तो इसमें अगर आपका पेपर है तो डेफिनेटली आपको इन कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जब आप पेश होते हैं और जब आपका इंटरव्यू होता है और उस हवाले से जब आप एक सीवी जो जनरेट कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली इट इज हेल्पफुल, ऑब्वियसली इट इज. Okay, can you share your first article that is published, which you mentioned of such title? Okay, well, I have published my article in Dove Press. Dove Press, मैंने उसमें mention किया है. Dove Press is the medical company. Okay, it's actually a publishing company. और मेरा रिसर्च आर्टिकल जो था इन्फेक्शन एंड ड्रग रेजिस्टेंस एक रिसर्च है उसके अंदर था. My field is actually pharmaceutical sciences. So plus initially when we are starting the research, manuscript should be written on paper, then we can give proper structure in Microsoft. No, we should start writing on Microsoft Word, so that आपकी जो टाइपिंग वो जो एक टाइपिंग जो स्पीड होती है वो भी बेहतर हो, वो आपका टाइपिंग स्किल उसमें बेहतर हो. क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इटसेल्फ एक बड़ा प्रॉपर पैकेज है माइक्रोसॉफ्ट को प्रॉपरली यूज करना. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की अगर हम बात करें, you should have expertise. Being a researcher, you should have expertise on Microsoft Word, Microsoft Excel, क्या कहते हैं ये PowerPoint. You should have expertise in them because आपने tables बनाने हैं, आपने graphs बनाने हैं, आपने जो है वो formatting उसकी करनी है, और so many things are there. So you should start writing from Microsoft. और बल्कि उसके कोई basic tutorials हैं उनको भी आप देखना शुरू करें. Should be going through those tutorials. There are lot many tutorials present on YouTube. You can go and access it and starting from it. Do not use pages. हाँ, आप यूज कर सकते हैं पेपर. ऑब्वियसली आप एक डायरी बनाएं, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन जरूर करें. बहुत सारे लोग करते हैं, इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं है, लोग करते हैं, बिल्कुल करते हैं. लेकिन जो मैंने पॉइंट्स पहले बोले कि माइक्रोसॉफ्ट पे क्यों हमें मतलब एक्सपर्टीज होनी चाहिए, मैंने सारे पॉइंट आपको बता दिए. नहीं, चैट जीपीटी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें भाई. इट इज़ अ गुड ऑप्शन बट चैट जीपीटी को बिल्कुल भी नहीं करें. और वो बिल्कुल जो है ना वो एआई जनरेटेड कंटेंट वाकई शो होता है.
और व्हाई यू आर यूजिंग ए चैट जीपीटी, आप अपनी थिंकिंग के साथ लिखें ना। ठीक है, आप एक रिसर्च आर्टिकल पढ़ें, उसकी समरी अपने वर्ड्स में लिखें, आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अपने वर्ड्स में उसको लिखें, और फिर उसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए, उसकी फ्लो को बेटर करने के लिए, उसकी ग्रामेटिकल एरर्स को बेटर करने के लिए आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं, ग्रामरली खासकर ग्रामरली अच्छा सॉफ्टवेयर है और ऑथेंटिक है, आप उसको कर सकते हैं। और ग्रामरली यूज करने में कोई हर्ज भी नहीं है। वो आपका सिर्फ क्या होता है कि सेंटेंस को जरा थोड़ा प्रोफेशनल फ्लुएंट बना देते हैं स्टूडेंट। अपनी थिंकिंग के साथ, जब आप अपनी थिंकिंग के साथ लिखिएगा ना, उसमें ये होगा कि आपका राइटिंग स्टाइल इतना जबरदस्त हो जाएगा कि आप कोई सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और इनसे ऊपर एक आपके colleague ने एक सवाल पूछा कि हाउ टू मेक कैची, तो वो कैची खुद ही होना शुरू हो जाएगा। तो मैं ये सजेस्ट नहीं करता, तब उस चीज़ को थोड़ा सा आप ये देख लें। मतलब इस पे ये है कि वो बताया ना कि इन चीज़ों के ऊपर आपको मुख्तलिफ रिसर्चर्स के, मुख्तलिफ टीचर्स के, मुख्तलिफ मेंटर्स के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज और पर्सपेक्टिव मिलेंगे। मैंने एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू पर्सपेक्टिव आपको बताया, आप किसी और से बात करेंगे तो वो उस पर डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू देगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि अगर आप अपनी राइटिंग को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग पे जो है ना फोकस करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, there's another question that we are recently studying a course in research pattern, code writing, and how teaching emphasizes the course on a topic. Yeah, you need a topic. Yes, it is select a topic based on our field of specialization, modifying it to focus on specialized area, trouble understanding. And yes, we can guide you. आप actually अपना हमें field of expertise बता दें, like from which department you are. आप हमें वो अगर बता देंगे तो we can help you in this regard. Okay, any free research journals with good impact factor? Yes, there are many research journals. बहुत सारे ऐसे research journals हैं जो तो free हैं, या बहुत सारे ऐसे research journals होते हैं that they give you uh, a full waiver। ठीक है, वो full waiver भी देते हैं, और लेकिन उस full waiver लेने के लिए आपका जो research article है या आपका जो research writing है या जो उसकी मतलब एक novelty या उसका एक मतलब एक impact होना चाहिए। ठीक है, यानी कि वो बड़ा अच्छा, मतलब इट शुड बी अ साउंड पीस ऑफ नॉलेज, तो वो बड़ा जरूरी होता है। तो डिस्काउंट्स भी देते हैं रिसर्च जर्नल जो अच्छे होते हैं। तो देयर आर लॉट, मतलब इंटरनेशनल जर्नल्स हैं मेडिकल एक्सपर्ट्स के, बहुत सारे यू कैन हैव लॉट ऑफ देम। ओके, इट्स द बेस्ट वेबिनार एआई टूल्स। ओके, will you please guide how to download HC book channel for specific domain like English, like we get the information back in one file? Yes, there is one file. You just go to the Google, and you write down the JCR report, JCR, Journal Citation Report, and you'll have an Excel file. You can download it. That Excel file consists of all the research journals around the world. उसके अंदर क्या चीज़ होती है कि रिसर्च जर्नल्स का नाम भी लिखा होता है, उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज भी लिखी होती है कि किस किस एरिया के वो आर्टिकल्स जो है वो पब्लिश करते हैं, और सारी डिटेल्स उस पर दी होती है। और HEC की वेबसाइट पे भी आप जाएँ, वहाँ पे भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। डॉज का जो आप कह रहे हैं वो ओपन डायरेक्टरी है, बिल्कुल उस पर भी आप जाके आपको डिफरेंट जो रिसर्च जर्नल्स उस पर आपको मिल सकते हैं। ये सारे वेब ऑफ साइंस हो गया, आपके पास जो आ जाता है स्कोपस हो गया, तो ये सारे बेसिकली डेटा बेसिस हैं, इनके अंदर ये सारी चीजें जो आपको आ सकती है। वेल, राइटिंग सिनॉप्सिस, सिनॉप्सिस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है ना कि आपने अपने रिसर्च प्रपोजल, जो रिसर्च क्वेश्चन है आपका, उस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसके बाद जो है ना आप अपने मेथोडोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस, दो चीज़ों के ऊपर फोकस होता है कि आप करना क्या चाहते हैं और किस तरह से करेंगे, और इस चीज़ के करने का फ़ायदा क्या है। भाई ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें। ठीक हो गया, यानी कि इसमें आप क्या होता है कि सिनॉप्सिस में आप पहले बताते हैं, बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएंगे कि आप एक्चुअली करना क्या चाहते हैं, मतलब टाइटल हो गया और करना क्या चाहते हैं, वो चीज़ आ जाएगी। फिर उसके बाद मेथड मटेरियल्स की किस तरह से करेंगे, और कंक्लूजन में आप ये लिखेंगे या एक्सपेक्टेड आउटकम्स में आप ये लिखेंगे कि एक्चुअली उससे फायदा क्या होगा। ओके, तो ये इसमें चीज़ आती है। ओके, recorded lecture, published my article in Science Tech, so nice job for beginners, it's very good. Everyone should have Science Tech is a research journal.
good for, okay, MBBS student fourth year. वेल, यूएसएमएलई के हवाले से आपने सवाल किया, तो यूएसएमएलई का ये है कि व्हाट वी एक्चुअली नो, उसमें ये होता है कि आप उसकी पहले रिक्वायरमेंट्स जो है ना वो देखें कि यूएसएमएलई में रिक्वायरमेंट्स क्या है, बिकॉज हमारे जो कोलीग्स गए हैं या मतलब लाइक कुछ फेलोज अपने हैं गए हैं, तो वो ये कि रिटन एग्जाम होता है, देन एक इंटरव्यू होता है, ऑब्वियसली रिसर्च का उसमें जो है वो कोई परसेंटेज होती है या कुछ इस तरह से, मतलब उसको जो है वो फोकस देते हैं। तो गो थ्रू द गाइडलाइंस, बिकॉज ये गाइडलाइंस इनकी अपडेट होती रहती हैं, सारा कुछ है। तो अगर उसमें कहीं पे भी कोई रिसर्च जर्नल या रिसर्च राइटिंग के हवाले से पॉइंट है, हम उस पर फर्दर आपको गाइड या क्लियर जो है क्लैरिफाई हम कर सकते हैं इस हवाले से। Yes, one of the student that research AI tool webinar is, आप इसे अटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल आप इसे, you do attend this, uh, you do attend this because he's the co-editor of Journal of International Study in Physical Medicine and Rehabilitation. डू अटेंड दिस, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप देखें इसमें वो क्या कहते हैं, क्योंकि देखें एआई इज, एआई टूल्स जो हैं, वी हैव टू अडेप्ट देम, वी हैव टू टेक हेल्प फ्रॉम देम। सही है, यानी कि आप बिल्कुल इसे डिनाई भी नहीं कर सकते और बिल्कुल इस पर रिलाय भी नहीं कर सकते। इनकी दोनों चीज़ें कि आपने इसको डिनाई बिल्कुल नहीं करना कि जी एआई तो कोई चीज़ ही नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन टोटली रिलाय भी नहीं करना कि बस ये एआई से ही हमने हेल्प लेनी है। सो यू डोंट डू दिस। तो बिल्कुल ना एक म्याना रवि के साथ, एतदाल पसंदी के साथ आपने चलना है कि अपनी क्रिटिकल थिंकिंग और अपना जो आपका वो है ना, उसके ऊपर जो है ना वो आपको रहना चाहिए, यानी कि यू हैव टू हैव योर ओन क्रिटिकल थिंकिंग, your own way of writing. You have to depend on it, your own way of writing. Then you take help from these AI tools for proofreading, for grammatical error, for the formatting error or something like that. But totally rely उनके ऊपर नहीं करना चाहिए। Well, there is a question. जी जी बिल्कुल, इंटरनेट के जो है ना वो मसले हैं, वी डू रिकग्नाइज दैट। लेकिन ये है कि कोशिश है कि मतलब रिकॉर्डिंग के थ्रू जो है सारी चीज़ें जो है वो हो जाती हैं। तो लेकिन जो भी आपका कोई क्वेश्चन होता है तो एट द एंड आप पूछ लिया करें, उसको हम जरूर हम आएंगे डिटेल में। लेकिन ये इशू है, बिल्कुल एग्जैक्टली ये इशू है, वी डू रिकग्नाइज दैट। या डू वी हैव अनदर क्वेश्चन प्लीज? या ओके, प्रूफ रीडिंग एंड रीफ्रेजिंग। प्रूफ रीडिंग और रीफ्रेजिंग में एक्चुअली फर्क ये होता है, रीफ्रेजिंग हम करते हैं, अच्छा रीफ्रेजिंग में ये होता है कि हमने बिल्कुल सिंपल इंग्लिश में लिखा, लेकिन वो इतनी सिंपल इंग्लिश है कि वो मतलब थोड़ा सा स्टैंडर्ड से थोड़ा हट के है, यानी कि लाइक इफ यू रीड सम रिसर्च आर्टिकल्स, तो आप देखेंगे कि एक थोड़ी सी स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें लिखी होती है। तो जो एआई टूल्स होते हैं लाइक ग्रामरली है या क्विल बोट है, वो क्या करेगा कि उसको रिफ्रेश करके थोड़ा स्टैंडर्ड कर देगा, ठीक है, उसको रिफ्रेश करके स्टैंडर्ड कर देगा। तो जब वो स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, तो उसके बाद ये है कि आप उसको प्रूफ रीड करेंगे। प्रूफ रीड से मुराद ये कि आप उसे चेक करेंगे बार बार पढ़ के कि क्या वो मीनिंग तो नहीं उसने चेंज कर दी, ठीक है।
यानी कि बाद होता है ना ऐसा कोई सिनोनिम कर देता है कि जिससे जो एक्चुअली जो उसका जो टेक्निकल मीनिंग ऑफ द सेंटेंस है क्या उसको तो नहीं उसने चेंज कर दिया, तो दैट इज एक्चुअली। तो ये दोनों में ये फर्क है। अच्छा, फिर प्रूफ रीडिंग में ना बहुत सारी चीजें और भी होती हैं। प्रूफ रीडिंग में हम ग्रामेटिकल एरर्स के साथ साथ फॉर्मेटिंग एरर्स भी देख लेते हैं कि आइदर आवर टेबल्स आर अलाइंड विद द जनरल फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस, आइदर आवर जो हमारी जो ग्राफ्स हैं वो क्या प्रॉपर इंफॉर्मेशन शो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ आ जाती है। फिर प्रूफ रीडिंग में हम जारी बात है टेक्निकल एरर्स को भी देख लेते हैं। प्रूफ की सारी चीज़ें आ रही हैं। रीफ्रेजिंग में सिर्फ और सिर्फ वही आ रहा है कि हम अपने जो है ना सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जो है उन्होंने मेथड यूज करके बेहतर बना। Yes, Rashid, do we have another question or we should wind up? Okay, dear colleagues, this is अस्सलाम वालेकुम सर काइंडली डॉक्टर अली से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो ये आज के और कल के लेक्चर के दोनों डॉक्यूमेंट्स शेयर करवा दीजिएगा। थैंक यू। okay, your request is recorded. Uh, we have talked to the management, वो इंशाल्लाह इस चीज को जो है ना वो देख लेंगे। Thank you so much everyone. I hope के आप लोगों को चीजें get all the points, and I do apologize for the internet connection, and you know in Pakistan there are a lot many issues, so I do apologize for that internet connections, and inshallah we'll be having a lecture on next Friday. My lecture is again scheduled by next Friday, and we'll be meeting there. Thank you so much everyone.